structure ratios, they talk about long term solvency. कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज जो हम पढ़ते हैं उसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है टू असेस whether the company is able to meet its long term obligations or not, whether the company is able to pay off their long term liabilities or not. So that is the purpose of studying this category of ratios, that is capital structure ratios or solvency ratios. So these ratios, they measure the ability of the company to survive over a longer period of time, right? Okay. So long-term creditors or debenture holders, they are interested in the company's ability to pay interest when it becomes due, right? And whenever they become due or when they mature, they always expect the company to repay the principal component to them. If company fails any issue in repaying that money back, then the company's long-term solvency is always a question mark. अगर कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को मैच्योरिटी पे रीपे नहीं कर पाती है या अपना लॉन्ग टर्म लोन, कोई भी लॉन्ग टर्म लोन है जो कंपनी ने लिया है, अगर उसको रीपे नहीं कर पाती है, तब कंपनी की जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन है उस पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इज कंपनी सॉल्वेंट टू रीपे द मनी बैक टू their debenture holders or to their long term creditors or not. Is it okay? Right. So these ratios, they indicate the mix of debt and equity in the capital structure of a company. So what is the capital structure? Every company which is doing business, right, they have a capital structure. Even a pan shop on the roadside, they have a capital structure, right? अब ये जो capital structure होता है ये क्या है? It is a mix of debt and equity, right? Clear? So अब equity और debt पे I presume that all of you know the difference between equity and debt. मैंने पहले क्लास में बताया भी होगा, right? Investors who invest money in a company through equity are known as equity shareholders, and investors who invest money in a company through debt, they are known as debt holders or debenture holders. Clear है? Equity shareholders, they are the owners of the company. Debenture holders are the creditors of the company. They are the outsiders of the company, outsider to the company. Equity shareholders, they get dividend on their investment. So the return which is available to equity shareholder is dividend on their investment. And the return available to debenture holders or to debt holders on their investment is interest. तो इक्विटी शेयरहोल्डर को डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है. Now the rate of dividend, rate of equity dividend is not fixed. It is not fixed in advance. It purely depends upon the availability of the profit, whereas rate of interest is always fixed in advance. तो जब भी हम कभी लोन लेते हैं तो हमें पहले से ही एडवांस में रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रीज होता है, फिक्स्ड होता है, पता होता है कि this is the interest which I will be paying, right? Then equity shareholders, being the owner, they have a right to vote, whereas debenture holders or the debt holders, being the outsiders, being the creditors, they do not have any such right. कोई right to vote नहीं होता उनके पास, कोई voting अधिकार नहीं होता है, किसी को अपॉइंट ही नहीं कर सकते, किसी को रिटायर नहीं कर सकते. Clear? Equity shareholders, you can say, they have a claim on residual income. Claim on residual income का मतलब क्या होता है? कंपनी सब कुछ पे करने के बाद अगर कंपनी के पास कुछ बचता है तो उस पे अधिकार जो होता है वो केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है. डिबेंचर होल्डर्स का पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता, right? Another important feature of difference between equity and debt debenture is that equity जो है वो एक risky instrument है, risky financial instrument है, right? Debenture is not a risky financial instrument, वो नहीं है. Are you getting my point? Clear है? Understood? So ये कुछ basic difference है between equity and debt.
So every company which is doing business is having a capital structure, and capital structure is a mix of equity and debt. Now, अब कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर प्योरली 100% इक्विटी ओरिएंटेड भी हो सकता है, वो 100% डेट ओरिएंटेड भी हो सकता है, या वो पार्शियली इक्विटी भी हो सकता है और पार्शियली उसमें डेट भी हो सकता है. लेकिन अब ये होना कैसा चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का ऐसा होना चाहिए जहां पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कंपनी की कम है, लेकिन वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो कंपनी की ज्यादा है. Understood? So here I am talking about two things. One is what you call the overall cost of capital, which is denoted by KO. Another is denoted by V, which is known as value of firm. One is the value of firm and another is what you call overall cost of capital. Is it okay? Overall cost of capital. Now इन दोनों में inverse relationship है. क्या है? Right. अगर as a businessman, as an entrepreneur, we always want कि हमारी कंपनी का वैल्यू कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए. So the value of the firm need to be higher. लेकिन अगर value of the firm need to be higher, then this overall cost of capital has to be minimum. Is it okay? अगर कंपनी को वैल्यू ऑफ द फर्म को बढ़ाना है तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को उसे कम करना ही पड़ेगा, तभी वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, एनहांस होगा. एंड व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ फर्म? वैल्यू ऑफ फर्म इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट. इज इट ओके और नॉट? अंडरस्टूड? ये थोड़ा सा एक ब्रीफ दिया है मैंने आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैल्यू ऑफ द फर्म का, बट अंडरस्टैंड that these ratio what they indicate the mix of debt and equity. और ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक इन्वेस्टर के लिए बिफोर दे इन्वेस्ट मनी इन अ कंपनी और इन अ बिजनेस. सबसे इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ दी. सो कोई भी कंपनी, ऐसी कंपनी में कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा अगर उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट बहुत ज्यादा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो डेट अगर ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट कॉस्ट होगी, और इंटरेस्ट क्या होता है? फाइनेंशियल कॉस्ट है, और जितनी ज्यादा फाइनेंशियल कॉस्ट होगी उतना ही ज्यादा कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और कंपनी इज एक्सपोज टू फाइनेंशियल रिस्क. व्हाट हैपेंड विद कंपनीज लाइक किंगफिशर, विजय माल्या की 7,500 करोड़ का आपको लोन था, बैंक को चुकाना था, आपने डिफॉल्ट कर दिया, आप नहीं पे कर पाए, राइट? So what happened? And there are many other companies जो डिफॉल्ट करते हैं. तो जब हमारा फाइनेंशियल कॉस्ट ज्यादा होता है और हम अपनी फाइनेंशियल कॉस्ट मीट नहीं कर पाते तो कंपनी क्या करती है? डिफॉल्ट करती है. जब आप डिफॉल्ट करते हो इन रीपेइंग दैट मनी बैक टू दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ बैंक्स, फिर क्या होगा? आपका जो फाइनेंशियल रिस्क होता है वो बढ़ जाता है. फाइनेंशियल रिस्क जब बढ़ जाता है और कंपनी is not able to meet its obligation, so क्या होगा? It leads to bankruptcy. It leads to closure down of the operations of the company. It leads to winding up of the operations of the company. Is it okay? और फिर ऐसा हो सकता है कि बैंक है, जो lenders हैं, जो financial institutions हैं, they may sue the company. They may take them to the court. फिर legal case होगा. And it may happen that the company may have to declare themselves bankrupt and उनका जो मार्केट में गुडविल इमेज होता है वो डिमोलिश हो जाता है. Is it okay? So कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? जुडिशियस मिक्स होना चाहिए. 100% इक्विटी भी हो सकता है, वो डेट भी हो सकता है, वो पार्शियली इक्विटी और पार्शियली डेट भी हो सकता है. Is it understood? Is it clear? Right? So these ratios they calculate the financial risk of the company. Clear? Right? Okay. So the first ratio in this category is debt equity ratio. अगर हम debt equity ratio की बात करें, so it is debt upon equity. So अगर कल आपको किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना हो, किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना हो, तो what will happen? That you have to look for this particular ratio. This is one ratio which normally every investor looks for. कि कंपनी का debt equity ratio कैसा है? Are you getting my point? Right? So this ratio, it shows the relationship between long-term external equities, which we call external debt,
and the internal equity, which we call shareholders fund of a company. Clear? Now, if I say that debt equity ratio of a company, for example, debt upon equity, अगर मैं बोलूं ये 1/1 है, it means for every one debt, company has one shareholders fund. Are you getting my point? डेट कहां से मीट करोगे? शेयरहोल्डर्स फंड से मीट करोगे, और शेयरहोल्डर फंड क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. इज इट ओके? तो अगर कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं होगा तो क्या कंपनी अपने डेट्स को रीपे कर पाएगी? नहीं कर पाएगी. अपने ऑब्लिगेशंस मीट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी. सो 1:1, फाइन. फॉर एवरी वन डेट कंपनी हैज वन शेयर होल्डर्स फंड. लेकिन अगर मैं बोलूं कि इफ इट इज लेट्स से 4/1, now the ratio has increased, but as an entrepreneur this ratio is not desired like this. This ratio should not be higher. यहां पे क्या है? हर 4 डेट को रीपे करने के लिए केवल कंपनी के पास एक शेयर होल्डर फंड है, ₹1 का शेयर होल्डर फंड है. सो यहां पे कंपनी की जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है और कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस उतने नहीं है. सो यहां पे कंपनी के लिए चांसेस ये है कि फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा होगा, फाइनेंशियल कॉस्ट ज्यादा होगी, फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा होगा, एंड इट विल लीड टू द बैंकरप्सी और क्लोजर डाउन ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी. और दैट इज द रीजन दिस रेशियो, व्हेन वी इन्वेस्ट मनी इन अ कंपनी वी ऑलवेज लुक फॉर डेट इक्विटी रेशियो. और ऐसा कहा जाता है कि डेट इक्विटी रेशियो शुड बी 1 और लेस देन 1. अगर जिस कंपनी के अंदर डेट इक्विटी रेशियो 1 या 1 से कम हो, उस कंपनी के अंदर इट इज बेटर टू इन्वेस्ट मनी, बिकॉज दैट कंपनी इज नॉट एक्सपोज टू फाइनेंशियल रिस्क. इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? राइट. नाउ व्हाट इज डेट? Debt here means long-term borrowings plus long-term provisions. Is it okay? Because here we are talking about external equities. We are talking about external debt. So here we are talking about long-term debt. What are we talking about? Long-term debt. So long-term borrowings plus long-term provision. There is another formula to calculate debt. That is total debt में से अगर मैं current liability minus कर दूं तो मेरी non-current liabilities आती हैं. वही non-current liabilities क्या होती हैं? मेरे लॉन्ग टर्म डेट है. इज इट ओके? राइट. अनदर फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेट इज कैपिटल एम्प्लॉयड. जितना मेरा कैपिटल पैसा मैंने बिजनेस में लगाया, और वो पैसा कहां कहां से आ सकता है? इक्विटी शेयर से आ सकता है, प्रेफरेंस शेयर से आ सकता है, डिबेंचर्स से आ सकता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से आ सकता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस से आ सकता है, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर से आ सकता है, रिटेन अर्निंग से आ सकता है. तो मैं क्या कर रहा हूं? जितना मेरे पास पूरा पैसा आया है उसमें से मैंने शेयर होल्डर्स इक्विटी हटा दिया, शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड हटा दिया, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल हटा दिया और रिजर्व्स एंड सरप्लस हटा दिया. सो व्हाट एवर विच एवर वे यू यूज, अंडरस्टैंड योर दिस डेट विल रिमेन सेम. आप कोई भी फॉर्मूला यूज करिए, डेट विल रिमेन सेम. इज इट ओके? अंडरस्टूड? नाउ non-current asset, or another formula, non-current assets plus non-current investment plus long-term loan and advances plus working capital minus non-current liabilities. Right? This is another way to calculate debt. So understand this debt equity ratio. Clear hai? The formula is clear? All right. Let's move further. Now, high debt equity ratio, what it indicates, and low debt equity ratio, what it indicates. So high debt equity ratio, it indicates that the company is more dependent upon the borrowings. मतलब debt equity ratio high का मतलब क्या हुआ? कि ये debt ज्यादा है, equity कम है. मतलब कंपनी अपने बिजनेस के अंदर जो डिप्लॉय किया है फंड वो ज्यादा डेट किया है. तो कंपनी किस पे ज्यादा निर्भर है? डेट पे ज्यादा निर्भर करती है. सो हाई डेट इक्विटी रेशियो इंडिकेट्स दैट द कंपनी इज मोर डिपेंडेंट अपॉन बोरोइंग्स और एक्सटर्नल डेट एज कंपेयर टू शेयर होल्डर्स फंड. और जितना ज्यादा डेट होगा, फाइनेंशियल कॉस्ट उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क होगा, एंड द चांसेस ऑफ यू कैन से bankruptcy are high, right? Liquidation is high. On the contrary,
you see low debt equity ratio. What it indicates? That the company is dependent upon shareholders fund as compared to external debt. Is it okay? Clear? So lenders जो हैं, they are at a lower risk and have higher safety. Is it okay? When the debt equity ratio is low. जब debt equity ratio low होता है तो जो lenders होते हैं, जो जिन्होंने पैसा कंपनी में दिया है, उनको रिस्क जो होता है वो कम होता है, राइट? क्योंकि एंड दे एक्सपेक्ट कि जो पैसा हमने दिया है वो सेफ है. Thus, this ratio, it assess the long-term financial position and soundness of the company. Is it okay? Means whether the company is able to meet its short-term, long-term obligations easily or not. Understood? Clear hai? All right. So, do it. Debt equity ratio. Debt equity ratio. So, you have to find debt and you have to find equity. So, what is debt here? Long-term borrowings plus long-term provisions, right? Long-term borrowings and long-term provision, right? So this is equal to 5 lakh and this is equal to 1 lakh, which is therefore your total debt is 6 lakh. Now we have to find equity. Equity is equal to, you have an equity share capital plus you have general reserve and you have profit and loss, but it is debit. So it is a loss. So what we have to going to here is profit and loss account, within bracket you write debit. अगर ये credit होता तो profit है, अगर ये यहाँ पे debit लिखा है इसलिए क्या है आपके लिए loss है, right? So equity share capital is 2 lakhs plus general reserve is 2 lakhs and your profit and loss, that is the loss, which is 1 lakh. Therefore your total equity is 3 lakh. So debt equity ratio is equal to debt upon equity, which is equal to 6 lakh divided by 3 lakh, which is equal to 2:1. That is your debt equity ratio. Is it okay? Clear? So calculate the second one. Calculate the second one.
Done. So we have to find debt equity ratio. So debt equity ratio is equal to debt upon equity, right? So debt is equal to long term borrowings plus long term provisions. So कितना हुआ ये? That is 3 lakh plus 1 lakh, which is equal to 4 lakh. So this is your debt. लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, क्या मैंने ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा है? अगर मैंने ब्रैकेट में यहां पे क्रेडिट नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है कि कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं. अगर यहां मैं क्रेडिट लिख देता तो इसका मतलब कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस लिए हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? अंडरस्टूड? राइट. सो ये मेरा डेट निकल गया. नाउ वी हैव टू फाइंड इक्विटी. इक्विटी को अगर मैं बैलेंस शीट को विजुअलाइज करूं तो क्या होगा? मेरे होंगे नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज. यही मतलब हुआ? इज इट ओके? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स minus current liability minus non-current liability, what I will get? My equity means equity share capital. Is it okay? Understood? So beta, let us find out first. I know my non-current liability is what? Debt. ये तो मुझे पता है. My current assets are given to me 2.5 and my current liability is also given to me, that is 2 lakh. So what is left here to find out? Non-current assets. So let me just find out non-current asset. Non-current assets is equal to fixed assets gross minus accumulated depreciation plus non-current investments plus long-term loans and advances, which is equal to 6 lakh minus 1 lakh plus 30,000 and plus 20,000, which is equal to rupees 5 lakh 50,000. This is my equity. This is my non-current assets. Is it okay? Let me substitute this value in this equation. So my equity is equal to non-current asset is 5 lakh 50,000 plus current asset is 2 lakh 50,000 minus current liability is 2 lakhs and minus non-current liability, that is debt, is 4 lakh. How much it comes to? 2 lakh. So my equity is 2 lakh and my debt is 4 lakh. So 4 lakh divided by 2 lakh. Therefore, my debt equity ratio is 2:1. Is it okay? Is it clear? Understood? Always remember, don't make a mistake. If credit is written, then it is a liability. Otherwise, it is an asset. Means company has given a long-term loans and advances to the people. Non-current liability is nothing but it is a debt. Clear? Now, there is another question. Let's say if company's debt equity ratio is 2:1. Understand this. If company's debt equity ratio is 2:1, then show
whether the ratio has improved, declined, or remained same under the given business transactions. So what are we going to see here is कि कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है और कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं. अब उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर जो डेट इक्विटी रेशियो है वो इंप्रूव हुआ, वो डिक्लाइन किया, या उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ. इट रिमेन सेम, राइट. लेट्स से फॉर एग्जांपल purchase of fixed asset by taking long term loan. पहला ट्रांजैक्शन क्या है? Purchase of fixed assets worth rupees 1 lakh by taking long term loan. Now it will remain same, or it will decline, or it will improve. How you will do it? कंपनी ने फिक्स एसेट परचेज किए 1 लाख रुपए के, लेकिन उसके लिए उसने एक लॉन्ग टर्म का लोन लिया है 1 लाख रुपए का. इंप्रूव होगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा. कुछ कहते हैं इंप्रूव होगा, कुछ कहते हैं सेम रहेगा. कम हो जाएगा. आ गया वर्जन एक और कि सर कम हो जाएगा. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई तो बोले कि कम हो जाएगा, राइट. सो ओके, कम हो जाएगा. सो वी हैव ऑल द 3 ऑप्शंस, बट नाम आंसर तो एक ही है. अब ये करना कैसे, मैं आपको इसका की बता रहा हूं, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू इन एन एग्जाम, मान लो एमसीक्यू के अंदर आ जाए, तो आप कैसे करोगे? केवल देखने से नहीं पता लगेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट. अब देखने से ये आप ये तो बता सकते हैं कि सुंदर है, बट ये कैलकुलेशन नहीं, मैं ये नहीं बता सकता कि इसका आंसर सही है या गलत है. सो व्हाट लेट अस डू कि मानते हैं कि मेरा जो डेट इक्विटी रेशियो है, डेट अपॉन इक्विटी, ये मेरा कितना है? 2/1 है. क्लियर? तो मैं एक बात मानता हूं कि मैंने एज्यूम किया कि मेरा जो डेट है वो कितना है? 10 लाख है, और मेरी जो इक्विटी है वो कितनी है? 5 लाख. आप कुछ भी कर सकते हो. 2 लाख 1 लाख भी कर सकते हो, 2 लाख 1 लाख भी कर सकते हो, 6 लाख 3 लाख भी कर सकते हो, 8 लाख 4 लाख भी कर सकते हो. बट रिमेंबर दिस रेशियो शुड नॉट चेंज. पहली चीज. अब कंपनी ने बोला, ट्रांजैक्शन कहता है कंपनी ने फिक्स एसेट्स परचेज करे, तो फिक्स एसेट डेट नहीं है, फिक्स एसेट इक्विटी नहीं है. ट्रांजैक्शन क्या हुआ कि फिक्स एसेट्स भी बढ़े और लॉन्ग टर्म लोन जो है वो भी बढ़ गया. कितने से? 1 लाख रुपए से. लेकिन मेरी इक्विटी में कोई बदलाव नहीं आया. सो मेरी जो रिवाइज्ड डेट हुआ वो हो गया अब 11 लाख का, और मेरा जो रिवाइज्ड इक्विटी है वो है 5 लाख की. सो नाउ माय रिवाइज्ड debt equity ratio will be 11 lakh by 5 lakh, which is equal to 2.2:1. It means the ratio has improved, the ratio has increased. Have you understood? Is it clear? ये hypothetical आपको लेना पड़ेगा. Just solve it and find out whether the ratio has improved or it has declined or it has remained same. But you have to assume it and then solve it. I'm giving you another transaction. Let's do another transaction. Yeah. हाँ, अगर वो लॉन्ग टर्म डेट है तो, इफ इट इज अ लॉन्ग टर्म डेट, इट इज अ नॉन करंट लायबिलिटी. यहां पे हम डेट इक्विटी रेशियो पढ़ रहे हैं, तो यहां पे मैं आपको बताऊं डेट हम मान रहे हैं कि वो लॉन्ग टर्म है. Is it okay? Let's see another transaction. Issue of new shares for cash. Let's say another transaction is issue of new equity shares worth rupees 1 lakh.
इन कैश, नॉट इन काइंड, इन कैश। मतलब कंपनी ने नए शेयर्स इशू करे 1,00,000 रुपए के, तो we every time we have to do it in the debt upon equity which is equal to 2/1 which is equal to let's say 2 lakh upon 1 lakh. मेरा रेशियो विल रिमेन सेम. सो मेरा रिवाइज्ड डेट कितना हुआ? विल इज देयर एनी चेंज इन डेट? नो. सो माय डेट विल रिमेन सेम. कंपनी ने इक्विटी इशू करी तो माय रिवाइज्ड इक्विटी विल बी, पहले 1,00,000 की इक्विटी थी, 1,00,000 की थी, अब कंपनी ने नए शेयर्स इशू करे 1,00,000 के और, तो टोटल इक्विटी शेयर्स कितने हो गए? 2 lakhs हो गए. इज इट ओके? 2 lakh, राइट? देयरफॉर रिवाइज्ड debt equity ratio is equal to 2 lakh upon 2 lakh, right? Which is equal to 1:1. What happened to the ratio? Declined. That is how you should do it for every such question. कल अगर एग्जाम में अगर आपको ये भी आ जाए, वेदर ये तो डेट इक्विटी है, करंट रेशियो भी आ सकता है, लिक्विड रेशियो भी आ सकता है, कोई भी अगर रेशियो अगर आ जाए आपको दिया गया है, तो आप पहले एक हाइपोथेटिकल उसका वैल्यू निकालो, गिव अ वैल्यू टू दैट ट्रांजैक्शन. इवन मैं अगर ट्रांजैक्शन नहीं देता, मैं बोलता कि इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स है इन कैश, तो आप क्या करोगे? एक एज्यूम करो अपनी फिगर और उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट करो एंड सी द इंपैक्ट, वेदर इट हैज इंप्रूव्ड और इट हैज डिक्लाइंड और इट हैज रिमेन सेम. क्लियर है? अंडरस्टूड? Another is issue of bonus shares. Let's say another transaction. Issue of bonus shares. What happened to debt equity ratio? सेम रहेगा? हैं? नॉर्मली इंटरव्यू में पूछा जाता है, अगर कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है तो क्या कंपनी की इक्विटी बढ़ती है? नो. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड ऑफ प्रॉफिट्स. जो प्रॉफिट हैं उसी में से आप अपने बोनस शेयर्स इशू करते हो, पैसा नहीं आता. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यहां पे ना तो आपका डेट इफेक्ट होगा और ना ही आपकी इक्विटी इफेक्ट होगी. सो द रेशियो विल रिमेन सेम. इज इट ओके? सो इट इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल. केवल कन्वर्जन है उसका, प्रॉफिट्स का इक्विटी शेयर कैपिटल में. इसके अलावा कोई नया फंड नहीं आ रहा. इज इट ओके और नॉट? सो दैट इज हाउ यू शुड डू इट. जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, हाँ, जैसे रिलायंस ने 1:2 का बोनस इशू किया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने 1:2 का 1:2 का, हर एक इक्विटी शेयर के बदले 2 या हर 2 शेयर के बदले 1, वॉट एवर इट रेशियो इट इज. इक्विटी नंबर ऑफ शेयर्स तो विल रिमेन सेम. तो फिर all right, so now we are moving down to the next ratio which is total asset to debt ratio. Total asset to debt ratio, this is another ratio, and the formula to calculate this ratio is total assets divided by long term debt. Total assets divided by long term debt. Is it okay? Total assets we know, there are a lot of, अब तक तो इतना समझ में आ गया होगा. बैलेंस शीट को विजुलाइज करो तो वी हैव नॉन करंट एसेट्स, वी हैव करंट एसेट्स, दोनों को ऐड करेंगे टोटल एसेट आ जाएगा. दूसरा क्या है? टेंजिबल एसेट्स प्लस इंटेंजिबल एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस करंट एसेट्स, सबको ऐड कर दो तो भी टोटल एसेट आ जाएगा. इज इट ओके? लॉन्ग टर्म डेट वी नो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, दैट वी नो. So what this ratio measures? This ratio, it measures the extent to which the long-term debt is being covered by total assets of the company. Are you getting my point? कि कंपनी के जो लॉन्ग टर्म डेट हैं, उस कंपनी के जो टोटल एसेट्स है वो लॉन्ग टर्म डेट को कितने एक्सटेंट तक कवर
कर पाते हैं. Are you getting my point? Clear? So, do you want this ratio to be higher or lower? Higher, right? Why? क्योंकि जितना ये रेशियो हायर होगा, कंपनी जो है अपने लॉन्ग टर्म डेट को उतने ही आसानी से टोटल एसेट से मीट कर पाएगी. मतलब high ratio, it shows that safety of margin for the lenders of in the business. They have high margin, high safety is there. मतलब उनका पैसा नहीं डूबेगा. कल अगर किसी वजह से कंपनी अपने रीपे नहीं कर पाती तो उनके पास ऑप्शन क्या है? एसेट्स बहुत ज्यादा हैं, उनको ओपन मार्केट में बेचिए, फंड जनरेट करिए और लेंडर्स का पेमेंट कर दीजिए. इज इट ओके? दैट इज व्हाट हैज हैपेंड विद किंगफिशर आल्सो. 7,500 करोड़ का अगर उनका बैंक का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा देना है तो क्या किया सरकार ने? उसके जो एसेट्स थे वो सेल ऑफ करके जो पैसा आया उससे उन्होंने लायबिलिटीज पे ऑफ कर दी. इज इट ओके? So low ratio means lower safety for lenders as the business depend largely on outside loans. Is it okay? This means proprietor investment is low. Is it okay? Understood? So this is what you call total asset to debt ratio. MCQs में बहुत क्वेश्चंस हैं, होंगे हैं नहीं होंगे, मैंने नहीं बनाया है. I do not know, मैम. ये तो पेपर बनाने वाला जानता है कि किसका पेपर किसने बनाया और किसका आएगा. I do not know. बस 6th को है आपका एग्जाम. मान के चलिए आज आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया. Right? Clear? So let's do a problem on this. Well, this is the problem. Okay, some people are writing. Let me just, anyone who is noting can note it fast, please. Done? Okay, this is the problem. You have to calculate total asset to debt ratio. Kariye. You are given capital employed, current liability, fixed asset, gross, accumulated depreciation, non-current investment, trade receivables, equity share capital, 8% debenture, capital reserve, profit and loss, debit balance, cash and cash equivalents. So total asset to debt ratio, total assets to debt ratio. Here debt means long-term debt. Here we are talking about. So total asset, how do you calculate total assets?
that is equal to non-current assets plus current assets, right? So non-current assets, let us calculate non-current assets here, which is equal to fixed assets gross minus accumulated depreciation right? Then we have plus non-current investments plus non-current investment. These are our non-current asset. That is how much? 15 lakh minus 2 lakh and plus 7 lakh. How much it is? 20 lakhs. Current assets are trade receivables and yes, plus cash and cash equivalents, which is equal to 2,50,000 plus 1,50,000, which is equal to rupees 4 lakh. So from here, therefore, your total asset is equal to 20 lakhs plus 4 lakhs, which is equal to rupees 24 lakhs. फिर नहीं करेंगे. So this is clear. So we calculated the numerator, that is total asset. Now you have to calculate debt. Capital employed minus equity share capital. Absolutely. Capital employed minus equity share capital or equity shareholders fund. इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है और कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है तो माइनस तो करने की जरूरत नहीं है ना ऐड करेंगे उसके अंदर. इक्विटी शेयर कैपिटल बिल्कुल. कैपिटल एम्प्लॉयड जो प्रोप्राइटर ने खुद से उसमें हाँ कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स सब होता है. हाँ तो कैपिटल एम्प्लॉयमेंट से हम माइनस करेंगे ना इक्विटी शेयर कैपिटल, तभी तो डेट आएगा. So the numerator we have got. Now let us calculate debt. And the formula to calculate debt here is what is capital employed? Capital employed is equal to shareholders fund plus debt, right? So let us first calculate shareholders fund. Shareholders fund, which is equal to equity share capital plus you have capital reserve and you have profit and loss, but this profit and loss is debit. It is not credit, so it is a loss. So minus profit and loss debit balance. So equity share capital is how much? 10,50,000. Your capital reserve is 2,40,000 and minus your profit and loss debit balance is 30,000, which is equal to rupees 12,60,000. This is your shareholders fund. This is your shareholders fund. Capital employed is already given to you. Therefore, 20,20,000 is equal to 12,60,000 minus, plus debt. Therefore, debt is equal to 20,20,000 minus 12,60,000. How much it comes to? 960. 9,60,000, right? So debt we have calculated. We have also calculated total asset. Therefore, total asset to debt ratio is equal to 24 lakhs divided by
9,60,000. How much it comes to? How much? 2.5 is to 1. This is your answer. 2.5 is to 1. Always remember, you have to remember these formula, please. Only then it will be easy for you to solve the problems in the exam. Is it okay? Right. Now let's move to the next one. 8% debentures plus तो करंट लाइबिलिटी हाँ कर सकते थे कितना आ रहा है हाँ 4,80,000 आएगा ना इसमें इसका मतलब कुछ और भी है ना कंपोनेंट इसका मतलब कुछ और भी कंपोनेंट है हाँ तो लेकिन पॉइंट है कि कैपिटल एम्प्लॉयड अगर नहीं दिया गया होता तो शायद हम फिर ये अप्रोच लगाते लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया है इसलिए हमारी अप्रोच होनी चाहिए डेट निकालने की यूजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे उससे निकाल सकते हैं टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी टोटल एसेट उससे डायरेक्टली टोटल एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस करो और माइनस कैपिटल माइनस रिजर्व्स राइट करो प्लस प्रॉफिट एंड लॉस करो तो उससे निकालो तो कितना निकलता है सेम आ रहा है हाँ उससे भी कर सकते हो राइट so there are various ways to calculate it right done so let's move down to the next one which is known as proprietary ratio and the formula to calculate this ratio is proprietors fund upon total assets proprietor funds upon total assets right now proprietors fund here important is that you need to remember we do not add debt here at all the new component which is added here is preference share capital so proprietor fund is equity share capital plus preference share capital plus reserves and surplus yes right proprietors fund there's another formula to calculate it non-current assets plus working capital minus non-current liability you get again proprietors fund now why this ratio is studied and it is important this ratio is important why because for unsecured lenders and creditors means unsecured means they are not secured they are given a loan but they have given a loan without any collateral they have given any loan without any security that is the reason they are unsecured right so unsecured agar lenders hain और creditors hain तो वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कंपनी के पास टोटल जो एसेट्स एम्प्लॉय करें उसमें शेयर होल्डर्स फंड का कितना प्रोपोर्शन है सो दैट व्हाट हैपन कंपनी उन एसेट्स को यूज करके अब उनको उनका जो पैसा है वो वापस कर दे क्लियर है दैट इज अनसिक्योर्ड एंड लोन्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स सो हाई रेशियो जितना हाई रेशियो होगा इट मींस अनसिक्योर्ड लेंडर्स के लिए उतनी ही ज्यादा सेफ्टी होगी जितना ये रेशियो लो होगा इसका मतलब दैट मींस दैट जो अनसिक्योर्ड लेंडर्स हैं क्रेडिटर्स हैं दे आर एट ग्रेटर रिस्क means it is the chances that the company fails to repay their money back वो बहुत हाई हो जाएंगे are you getting my point clear hai so proprietors fund upon total asset so this ratio need to be higher as compared to any other ratio please so the higher ratio means adequate safety to unsecured lenders and creditors clear hai so we let's move further
So this ratio is very important. Interest coverage ratio, right? Most of the company which is having debt, right? The lender, the financial institution, banks, they always look for this ratio that is interest coverage ratio. And the formula to calculate this ratio is EBIT, earning before interest and taxes, divided by interest. And this ratio is calculated in times. What this ratio communicate is that how many times the company's EBIT is able to cover its interest. क्या बता रहा है ये रेशियो कि कितनी टाइम्स, क्योंकि इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मेट, always remember this format, that is sales minus variable cost is contribution minus fixed cost is earning before interest and tax minus interest is earning before tax minus tax. What you get is earning after tax. From here we subtract preference dividend, right? What we get is earnings available to equity shareholders. And if we subtract from here equity dividend, which is paid to equity shareholder, what we get is the profit. Clear? So if you see, सबसे पहले कंपनी ने अपनी कॉस्ट कम कर दी, उसके बाद इंटरेस्ट पे कर दिया बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, लेंडर्स को, उसके बाद टैक्स पे कर दिया टैक्सिंग अथॉरिटी को, उसके बाद अगर उसके इक्विटी, उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में कंपनी के में प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया, उसके बाद ये जो बचा ये अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है. ये जो फॉर्मेट है आने वाले रेशियोज में काम आएगा when we will be doing market value ratios. So earnings available to equity shareholder. From here, if we subtract equity dividend, what we get is the profit. मतलब सब कुछ पे करने के बाद जो बच जाए वो प्रॉफिट है कंपनी के पास, और ये प्रॉफिट फिर वापस कंपनी क्या करती है, इसी को वापस अपने बिजनेस में फ्लो बैक करती है, री इन्वेस्ट करती है और एक्सपैंड करती है, अपने बिजनेस को ग्रो करती है. क्लियर है? अंडरस्टूड? सो इफ यू सी, this is what we are talking about, EBIT upon interest. Means, for example, if my EBIT is 100 and my interest is 20, it means this interest coverage ratio is 5 times. Means company's EBIT is covering 5 times of interest. Is it okay? For example, if it is, let's say 100 and it is 80, for example, 100 by 80 means maybe it is 1 point something, right? So here it is only one time the company is able to cover its interest cost. If it is 100 by 100, exactly company's EBIT is able to cover its interest by one time only. If it is, let's say for example 100 by 120, it means then it leads to loss. अगर 100 में से 120 माइनस करोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव 20 आएगा. It means company's financial cost is more than earning before interest and taxes. Is it okay? Right? So this ratio is very, very important from the lender's point of view, bank's point of view, and financial institutions' point of view. This ratio is very meaningful to the creditors, to the debt holders, to the debenture holders, lenders, because वो पैसा देते हैं कंपनी को. This ratio, it talks about how many number of times the company's interest charges are being covered by earning before interest and taxes. So we always want this ratio to be higher, right? So a higher ratio is desirable because this is a sign that the company is able to meet its interest costs from easily from its EBIT, right? A low ratio is bad, खराब है. क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा ये लो होगा
इसका मतलब इंटरेस्ट मेरा बढ़ेगा, इंटरेस्ट मेरा यहां बढ़ गया, इसका मतलब कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का यूसेज ज्यादा है, कंपनी इज यूजिंग मोर ऑफ डेट इन देयर कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट? सो अगर ये रेशियो को मुझे बेटर करना है, अगर मेरे को या किसी भी कंपनी को ये रेशियो बेटर करना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसे इंटरेस्ट को कम करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कब कम होगा? जब आप अपने डेटर्स को क्या करोगे? रिटायर करोगे, रीपे करोगे, रिडीम करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज इट ओके? सो डेटर्स को, अपने डेट होल्डर्स को, अपने डिबेंचर्स को, अपने लोन को कंपनी जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी रीपे कर देगी, कंपनी के लिए उतना ही बेटर है। इज इट ओके? अंडरस्टूड? मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो एक अलग चीज है, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दीज टू थिंग्स। ये तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो वेरी करती है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आउटपुट का लेवल बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, आउटपुट का लेवल कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, राइट? फिक्स कॉस्ट क्या होती है? इट इज फिक्स्ड वेदर यू प्रोड्यूस और नॉट, फिक्स कॉस्ट विल ऑलवेज बी देयर। अगर आप रेंट पे करते हो तो रेंट आप चाहे 1 यूनिट बनाओ चाहे 1 लाख बनाओ, रेंट विल रिमेन सेम। Is it okay? So rent will always be there. So what are we talking about? We are talking about these two components. Is it okay? अगर ये रेशियो हमें हायर करना है, बेटर करना है, तो हमें अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट कॉस्ट तभी कम होगा जब आप अपने डेट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रीपे कर पाए हम। क्लियर है? ओके, डू दिस प्रॉब्लम प्लीज। Interest coverage ratio. You have to calculate interest coverage ratio. So in this, you are given net profit after tax 1,20,000. You are given 12% long-term debt, that is 20 lakhs, and you are given the tax rate. So you have to calculate interest coverage ratio. So the formula to calculate interest coverage ratio, first write down the formula, that is earning before interest and tax divided by interest. And this ratio is calculated in times. Not in percent, not in rupees, not in nothing, please. A is to B form. It is always calculated in times, right? So, अब we know the format. For हमको EBIT चाहिए, तो we know the format, that is EBIT minus interest. What we get is earning after tax minus tax. What we get is earnings available to equity shareholder and so on, right? Is it okay? So we are given earning after tax, which is 1,20,000, and tax rate is 40%. 40% किसका? Earning after tax का. 40% means 48,000. It means this has to be how much? 1,68,000. Why it has to be 168? You tell me, please. उसका 12% निकालो. 12% of 20 lakh is how much? 2,40,000. 2,40,000. So equation is x minus 2,40,000 is equal to 1,20,000. Yes or no? Right? So therefore x is equal to rupees 3,60,000. Therefore EBIT is equal to rupees 3,60,000. Is it clear or not? And my interest is this. Therefore ICR is equal to, interest coverage ratio is 3,60,000 divided by 2,40,000. How much it comes to?
Okay, 3:2, which is equal to how much? Done? Okay. Now we are moving down to the last category of ratio, that is market value ratios. We are calculating the market value So in these market value ratios, we will be studying all these ratios: EPS, price earning ratio, dividend per share, dividend payout ratio, and dividend yield. Right? Now, the first two ratios are important in the sense because these are the two ratios which derive the market price of a share of a company. The first two ratios, they derive the market price of a share of a company. So what is market price of a share of a company? MPS is equal to earning per share multiplied by PE ratio. MPS is equal to earning per share multiplied by PE ratio. Is it okay? So the first two ratios are very important. Clear? Now, let us move down to the first ratio in this category, that is EPS. Now, if you remember the format which I've just told you, that is sales minus variable cost is contribution, minus fixed cost is earning before interest and tax, minus interest is earning before tax, minus tax is earning after tax, minus preference dividend is earnings available to what is the numerator? See, profit after tax or earning after tax minus preference dividend. If you see that format, what is that? Earnings available to equity share holder divided by number of equity shares outstanding. Is it okay? So what is EPS? EPS is equal to earnings available to equity shareholders divided by number of equity shares outstanding. Now that is a ratio. Now this ratio is calculated in rupees always. And the essence and the importance of this ratio is that if I own one share of a company, then how much profit is designated to my share? एक शेयर पे मैंने कितना अर्न किया, दैट इज व्हाट यू कॉल ईपीएस. एक शेयर पे how much I have earned is what you call earning per share. Now EPS is closely watched because there is a strong correlation between the EPS and the market price of a share. इन दोनों में correlation है. कैसे? अगर EPS मेरा earning per share बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? जब मेरी earnings available to equity shareholder बढ़ेंगी. ये कब बढ़ेंगी? If you see that format, रिवर्स ऑर्डर में नीचे से अगर हम ऊपर चलें तो ये मेरा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर तब बढ़ेगा जब मेरी सेल्स बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा. अगर मेरा रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा तो मेरा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर नहीं बढ़ेगा. सो टू इंक्रीज अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर द कंपनी हैज टू सेल द प्रोडक्ट, द कंपनी हैज टू इंक्रीज द सेल्स, राइट. एंड नंबर वन, सेल बढ़ानी है और कॉस्ट को कंट्रोल करना है. तो जब कंपनी ऐसा करेगा तो ये न्यूमरेटर बढ़ेगा.
न्यूमरेटर बढ़ेगा तो मेरा ईपीएस जो है, व्हाट विल हैपन टू माय ईपीएस? इट विल इंक्रीज. मेरा अगर ईपीएस बढ़ेगा तो बाय डिफॉल्ट मेरा मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर विल आल्सो इंक्रीज. So there is a correlation between EPS and share price. When EPS declines, when EPS increases, the share price, the market price of a share of a company also increase. तभी आप देखो ना, जब आप देखते हो कंपनी जब अपने रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली होती है तो यू सी द मूवमेंट इन द शेयर प्राइस ऑफ अ कंपनी, राइट? और ये एक्सपेक्ट करने जा रहे हैं कि कंपनी इस साल ऑलमोस्ट इतना परसेंट ग्रोथ दे रही है अपने प्रॉफिट के अंदर, तो आप देखते हो सुबह से ही उस शेयर के अंदर मूवमेंट होता है और बढ़ना चालू हो जाता है. इज इट ओके? लेकिन जब रिजल्ट डिक्लेयर करा, मान लो उसका रिजल्ट जो इन्वेस्टर्स ने एक्सपेक्ट किया वैसा नहीं आता, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे एकदम से स्टॉक प्राइस जो है उस कंपनी का गिर जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. इज इट ओके? सो this is there's a strong correlation. So EPS is one of the most important ratio which is studied in valuing a company. As an investor, we always want to see the growth in EPS. पिछले 3 साल में क्या EPS था, पिछले 5 साल में क्या था, पिछले 10 साल में क्या EPS है, उसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कितना है, CAGR कितना है. क्लियर है? अंडरस्टूड? राइट. Now, next ratio in this category, we'll do later on all the problems, right? अगर मेरे को प्राइस अर्निंग रेशियो चाहिए तो ये फॉर्मूले यूज करके मैं पी रेशियो निकाल सकता हूं. सो माय पी रेशियो हियर इज व्हाट? एमपीएस अपॉन ईपीएस. एमपीएस अपॉन ईपीएस. इज इट ओके? Understood? So this ratio, it reflects the investors' expectations about the growth in the company's earning. How much they expect. For example, if the market price of a share is 100 and the earning per share is 10, then this ratio is 10 times. 10 times of what? Earning per share, EPS. The market price of a share is 10 times of earning per share. Is it okay? So we as an investor, we always want to invest in a company which has a high P ratio. Is it okay? अब कितना हाई होना चाहिए कितना नहीं, it is not defined at all. There are a lot of companies जिनका P ratio बहुत high है, but still their market price of a share of a company is still low, right? So I'm again telling you, before investing money in a company or in any business, right? There's ऐसा नहीं है कि केवल एक रेशियो को अगर देखें और उसी के बेसिस पे हम इन्वेस्ट करें, ऐसा नहीं है. There are a lot of other factors also which you have to consider before investing money in a business or in a company. So कुछ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, कुछ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है. अंडरस्टूड? ये कौन सी इंफॉर्मेशन हम बात कर रहे हैं? Which we can quantify. Qualitative information, we talk about technology, we talk about the in geographical areas where the company operates, what is the market share, what is acceptability of the product, competitors कौन-कौन है, better substitutes available in the market or not, right? वो बहुत सारी और भी फैक्टर्स होते हैं जो हम कंसीडर करते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग मनी इन अ ऑर्गेनाइजेशन, राइट? So the more attractive the company is to the investor, the higher is its PE ratio, right? An unusually low PE ratio indicates that the investors perceive a share to be fairly risky. अगर PE ratio कम होगा, इसका मतलब इन्वेस्टर्स का उस कंपनी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, लो है. वो उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को, उस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक प्राइस को रिस्की मानते हैं, राइट? So an unusually high P ratio indicates that investors have very high expectations for growth in earnings and share prices. But let me tell you, this is not a foolproof thing. P ratio high होने के बाद भी market price of a share क्या होता है? Low होता है. Is it okay? Right. So companies with negative earnings do not have P ratio. Please also understand. अगर कंपनी की earnings नहीं है, कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो उसका P रेशियो नहीं होगा क्योंकि उसका ईपीएस नहीं होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टाइम्स. पी रेशियो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टाइम्स, राइट? ईपीएस इज कैलकुलेटेड इन रुपीज.
Okay. Next ratio in this category we are moving is dividend payout ratio. Dividend payout ratio. Understand one thing, कंपनी को प्रॉफिट अगर होता है, उस प्रॉफिट से ही कंपनी क्या पे करती है? डिविडेंड पे करती है. क्लियर? सो इफ अ कंपनी इज हैविंग अ प्रॉफिट, कंपनी के पास 3 स्ट्रेटेजीज हैं अपने प्रॉफिट को यूज करने का. पहला, कंपनी चाहे तो 100% डिस्ट्रीब्यूट कर दे. 100% डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट को एज डिविडेंड टू देयर शेयर होल्डर्स. व्हाट कंपनी इज डूइंग? जितना प्रॉफिट कमा रही है वो सारा का सारा प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. पहला. दूसरा, 100% रिटेन कर ले. 100% हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, पूरा जितना प्रॉफिट कमाया उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, पूरा का पूरा रिटेन कर लेंगे. सो हियर व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट रिटेन्ड अर्निंग्स. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रिटेन्ड अर्निंग्स. सो अगर मैंने किसी कंपनी ने पूरा का पूरा पैसा पूरा का पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट, जितना कमाया पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सो हियर योर डीपी रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी 100%. 100 रुपए कमाए, 100 ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो कंपनी ने रिटेन कितना किया? 0. इट मींस हियर रिटेंशन रेशियो इज 0%. इज इट ओके? लेकिन यहां पे कंपनी ने पूरा रिटेन करा और डिस्ट्रीब्यूट 1 रुपया भी नहीं किया, तो यहां पे रिटेन अर्निंग्स हो गई. व्हाट आर रिटेन अर्निंग्स? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. रिटेन अर्निंग्स क्या होती हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का वो पोर्शन जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती अपने शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. सो रिटेन अर्निंग्स है. तो यहां पे रिटेंशन रेशियो कितना हुआ? रिटेंशन रेशियो 100% हुआ. इसका मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या हुआ? 0. सो फ्रॉम हियर वी केम अक्रॉस that DP ratio plus retention ratio is equal to 100, or what we call retention ratio is equal to 1 minus DP ratio, or we can say retention ratio plus DP ratio is equal to 1. अगर मैंने प्रॉफिट में से थर्ड स्ट्रेटेजी क्या है? पार्शियल हम क्या करते हैं? पार्शियल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या पार्शियल रिटेन कर लेते हैं. इज इट ओके और नॉट? सो अगर किसी कंपनी ने अपने प्रॉफिट का 70%, 70% रिटेन कर लिया क्योंकि उसे वो पैसा वापस बिजनेस में लगाना है, तो बाकी 30% उसने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. इज इट ओके? अंडरस्टूड? सो रिटेंशन रेशियो प्लस डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू 100. नाउ ऐसा कंपनी कब करती है? कंपनी कब रिटेन करेगी और कब डिस्ट्रीब्यूट करेगी? नाउ हर कंपनी चाहती है कि वो ग्रो करे, राइट, और हर कंपनी प्रॉफिट के लिए काम करती है. प्रॉफिट कमाएगी, उसी प्रॉफिट को वो वापस बिजनेस में लगाएगी, एक्सपैंड करेगी, डाइवर्सिफाई करेगी और ग्रो करेगी. अगर किसी कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, अगर कोई कंपनी बिजनेस कर रही है ऑलरेडी और उसके पास कोई प्लान नहीं है, कोई नया वेंचर नहीं है, कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, कोई मर्जर एक्विजिशन कुछ नहीं है, कोई नया प्रोडक्ट ऐड ही नहीं करना चाहती प्रोडक्ट लाइन के अंदर, जैसा चल रहा है वैसा चलाना चाहती है, तो कंपनी कह रही है कि आई डू नॉट हैव एनी प्लान्स. तो जो प्रॉफिट कमाया, तो पॉइंट यह है कि कंपनी अगर कोई एक्सपेंशन नहीं कर रही तो ग्रो कैसे करेगी? क्योंकि सेल्स तो बढ़ेगी नहीं, सेल्स नहीं बढ़ेगी तो प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो ईपीएस नहीं बढ़ेगा, ईपीएस नहीं बढ़ेगा तो मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ अ कंपनी नहीं बढ़ेगा. तो कंपनी कहती है कि अब एज एन इन्वेस्टर हम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो किसके लिए लगाते हैं? रिटर्न के लिए. और रिटर्न 2 तरीके से आता है, या तो डिविडेंड की फॉर्म में आएगा या कैपिटल एप्रिसिएशन की फॉर्म में आएगा. ठीक है? डिविडेंड